think there is the problem with this sentence is like it's the character and the IRL self should be very separate. So even though कहते हैं, I think if it's being said in there could be same lines जो दो तरीके से बोली जा सकती हैं. अगर in a distasteful manner someone is saying those lines and those words for someone, I condemn it personally. I think that is not right. That should not happen. But if it's directly to the character, I mean, I think people do have, matlab, should have that privilege to, attack each other's character in RP. I mean, that's for sure. स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग गैंग आरपी, मैंने ये चीज नोटिस करी है। गैंग आरपी में एक बहुत बड़ा पर्दा लोग लगा लेते हैं इस चीज का कि अ, हम तो गैंग है, कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, चाहे पीडी हो चाहे सिविलियन हो। सो आप थोड़ा सा कंसिडरेट होइए। एंड आप खाली आरपी तक के लिए गैंग है, रियल लाइफ गैंगस्टर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे सब आरपी करने आए हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को लेके। एंड the point said RR and all these things, all these terms given to few people, and उनको जब भी मिलना है deliberately इस तरह की बातें करना, please refrain from doing it. अगर किसी सामने वाले इंडिविजुअल को अच्छा नहीं लगेगा, वो टिकट रेज करेगा, actions will be taken, so be considerate about it. आगे से please. Thank you, Goli bhai. And last is humble request to the entire staff and the people doing RP in SoulCIty. Civilian RP is a beautiful thing, guys. Don't let it die. हम लोग जैसा कि I think कल मैं और गोली भाई की स्ट्रीम पे हम लोग बात कर रहे थे, there are a lot of things planned. और अपना आप लोग imagination restrict करके क्रिम मत करने. Just because if you want to do civilian RP and आप क्रिम इसलिए करने लग गए because you think कि there are not enough things to do, ऐसे मत, ऐसा ये thought process बंद करना पड़ेगा कभी ना कभी. I think the way you guys need to think is there is an idea which you guys think also is feasible, जो हो सकता है, वो आप लेके आओ and we'll do that. And but for that you need to show progression also. ठीक है, सिर्फ आइडिया ही जरूरी नहीं है, you need to show progression after it. ठीक है, तो अगर आप करोगे तो it'll be amazing. And we have a lot of things planned. I'm pretty sure कि you guys will love it. तो for sure you know वो बहुत ही important एक aspect है. We'll make sure कि there'll be mechanics जो dependency create करेंगे for even gangs to rely on civilians for a lot of things in future, जिससे कि there's always a balance. ठीक है, तो काफी सारी चीजें जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं कि with VLT role play it was educational for us, तो हम लोगों ने काफी learn किया है, that was learning for us. And a lot of things we have already implemented and we'll keep doing that. ठीक है, so we keep going back and forth. Okay, so moving on to the next one. Is the server low-end PC friendly? If it isn't, can we apply FPS mod? As Godibhai said, um, it is very optimized right now, जैसा कि मेरे को लगता है for sure. And I don't think कि आपको कोई FPS mod लगाने की जरूरत पड़ेगी एरीज. Try playing the server. It should feel very optimized. Else open a ticket. Let us know क्या problem हो रहा है. We'll see कि if it's entirely कुछ एक script is becoming a reason for people having a hard time or an MLO or anything. We definitely want to know that feedback. But अभी जैसा कि हम लोगों का feedback है, in I think usually we will be 10 to 15 people while doing aggressive testing. तो उस टाइम पे we have had really good results. तो अभी तो मेरे को वो challenge नहीं दिखता है. What is number of slots we want to start somewhere slow and then grow. So 120 100 के बीच में कोई we'll pick a number. It's not that कि हम लोग चाहते नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले दिन enjoy ना कर पाए. The only reason of we doing this is कि that will be the stress test for the server. And we want to make sure कि जितने भी खेलें they get the best experience rather than we push it to a limit जहाँ पे
So धीरे धीरे, slowly and gradually, I think we take baby steps on server slots. What time server launches? I think between 7 and 8, guys. Till when will all the PD responses come? So, Flash, By tomorrow evening, around 5 o'clock, everything will be up for PD responses. thank you. Okay. Any idea server slots कितने होंगे? Reconnect prio कितने time का मिलेगा? Cadbury, can you tell me how much is the reconnect The prio time? reconnect time will be for 5 minutes. For 5 minutes, guys. So 5 minutes, we also felt ki would be more than enough for anyone who has crashed for genuine reasons would be able to reconnect into the server. If we didn't took any prior pass, then how long does it take to connect? I mean, RV gaming, this is a really difficult question for me to answer. I think there's no right answer to this question. Okay, so we'll know. We'll know apparently after few days of server running, you would know ki what times are easier. Like I mean, what things I think are more analytics rather. उसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है, so OGX, can we pick a name inspired from anime? Yes, you can. मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आपको कोई नेम पिक करना है, just think of it in a way कि can this be a name of a character IRL या फिर fiction? In fiction आपको बस ये सोचना है, जैसे in anime I see a lot of I also follow a lot of anime, तो कभी alias होते हैं. Aliases cannot be name. एलियस कैन बी समथिंग जो आप लोगों को बताओगे जब वो आपसे पूछेंगे, बट आपका जो आईडी कार्ड होता है, द लीगल डॉक्यूमेंट दैट यू हैव शुड हैव अ प्रॉपर नेम. ठीक है, सो अगर मेरा नाम, लेट्स से मैं चाहता हूँ सबको कि वो मेरे को आई मीन एनीथिंग, इफ दे वांट, इफ आई से कि मिस्टर एक्स बुलाए मेरे को, सो फॉर देम टू कॉल मी मिस्टर एक्स, इट कैन नॉट बी माई नेम. लेट्स से माई नेम वुड बी लाइट एनीथिंग और हान लुई वटेवर जो मेरे कैरेक्टर का नाम होगा. जब मेरे से पूछेंगे नाम क्या है, आई कैन टेल देम कि ये नाम है मेरा, विच इज मिस्टर एक्स. सो दैट इज ऑन मी, बट माई डॉक्यूमेंट नीड्स टू शो द रियल नेम. सो ये हो गया. Can we keep a different in-game name other than the backstory given during the whitelist form? हाँ, मतलब अगर if you have follow the same backstory, but अगर name is becoming an issue जो अगर realistic नहीं था, वैसे हमने अभी तक शायद we have given people windows, काफी सारे लोग होंगे आप लोगों में से जिनके हमने टिकट ओपन करके उनको बोला है कि आपका नाम रियलिस्टिक नहीं था, but we liked the backstory so we whitelisted you. I am saying, I'm telling you guys again कि we have been super lenient on that, but going forward हम लोग नहीं रहेंगे. So since अब हम लोग multiple times बता चुके हैं कि थोड़ा सा realistic name रखना है, so moving forward जो whitelist applications होंगे उसमें we'll be rejecting on basis of those kind of names. So अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, but for now I think you can change, but do not change your backstory, at least until if you want to inform the team, inform the team. Please take care of unrealistic jumps and stunts, and people should have fear of death. This will improve more realistic way of doing. This is a player driven rule. मतलब इसमें जितना हम मैकेनिक साइड से टेक केयर कर सकते थे घोस्ट ओपी, आई थिंक हमने कर लिया है. जो चीज़ें इसमें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि जब इफ़ आई पॉइंट अ गन एट यू, वो फेयर जो है वो आपको अपने माइक के थ्रू ही शो करना है. तो दैट इज एंटायरली ऑन द रोल प्लेयर एंड वील कीप अ वेरी क्लोज आई फॉर पीपल टू मेक श्योर कि वो फॉलो करें, बिकॉज विदाउट दैट देयर विल नॉट बी immersion. Will there be entry without? There for sure will be. I mean, it's not required. It's just something which gives you priority, matlab, in the number of slots.
इमोट बाय गाइज आई नो दैट आप लोगों ने बहुतों ने 5M से इमोट बाइंड्स करके रखे हुए हैं so sadly मैंने the नहीं team is किए still हैं। working on restricting you guys to do that but मेरा request है because since everyone is here I would highly recommend you guys to stop doing it. Just stop using the emote binds for you know gaining advantage. Emotes is for emotes आप लोगों के role play experience को enhance करने के लिए हैं. Emotes आपके you know emotes are not there for making you have a upper hand in situations. ठीक है? So do not misuse emotes and वो binds अगर हैं तो वो निकाल देना प्लीज़. कैफे कौन सा आएगा? आई मीन दिस इज समथिंग आपको आरपी में जाके एक्सप्लोर करना है. दिस इज नॉट आई थिंक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गोइंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर इफ़ यू गाइज हैव योर स्टोरी इज दैट यू आर अ बेकर तो तुमको ये सोचना है कि यू विल बी अ बेकर ओनली. और अगर इफ़ यू want to open a coffee shop it will be a coffee shop only. Do not think कि सर्वर में अगर मैं आज बर्गर शॉट डाल देता हूँ तो यू विल बिकम पर्सन who makes really amazing burgers. नहीं. Your backstory should stick to what you have written. वही रहनी चाहिए. और मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जो एसेट अवेलेबल होंगे उसके वो करवाएंगे. डू नॉट थिंक द अदर वे. ठीक है? देयर इज आई थिंक इस पर यू गाइज नीड टू थिंक डिफरेंटली. ठीक है? प्लीज चेंज वीसी रीजन टू इंडिया. ओके नाइस पीडीएस बट कैन यू चेक रिजित क्या है वीसी रीजन? Currently it's Singapore. सिंगापुर क्या is every is like can you guys So why put is an clear off on topic chat screen? if a lot of you are having problems with it? Clear. Yes, since most of people are okay so we'll keep it this way. ठीक है? So where are I? So ये हो गया है. I got disconnected and we will get disconnect prior. Yes, 5 minutes reconnect prior. What about LSPD interviews? When are they gonna help? Ratio, this is what your character needs to do, right? So you have just for your scenario, let's say he you already know that you have I mean a interview letter from a department and your character let's say arrives in a new city. So just be creative and think ki what he should do. Okay? And you will know you will get answers to this. Okay. Slots already covered. Slots. A lot of people have slots question. Okay. Change the So I bit think काफी सारे questions जब हम आंसर कर रहे थे you guys had repetitive questions. So about it. okay, are crosshairs banned? Server will have its own crosshair. External crosshairs are banned. ठीक है? I hope मतलब I'm clear on this कि सर्वर में ऑलरेडी एक क्रॉसहेयर होगा. So okay. So you know I'm saying that external crosshairs will be banned. So फिर से LSPD के फॉर्म्स ओपन होंगे. Definitely होंगे. This is the first batch. So yeah, for sure they will open. Rashid, do you want to take few or Rishit or Mm-hmm. Flash? Anyone? Are we on the I'll just Kalash point, right? yeah. I'll just be back one second.
हम्म। So Kailash का point is basically परमा के बारे में. So परमा is never forced. Mutually जब decide होता है तभी होता है. So if there's any RP scenario ongoing और ऐसा कुछ lead हो रहा है जिसमें there's an encounter या फिर कुछ ऐसा scenario जिसमें you can do a perma, you want to do a perma for your character, तब then you can tell the other guy कि हाँ I want to take this way. So ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तभी परमा होता है, नहीं तो परमा कैरेक्टर कभी मतलब फोर्स नहीं करते हैं परमा करने को. सो आई होप कैलाश दैट इज गुड. हाउ अबाउट अ लिमिट टू डू जॉब सो दैट ग्राइंडर्स कम हो जाए लो. सो एवरी जॉब माइट हैव अ कूल डाउन और वो सब तो मैकेनिज्म से सेट करा हुआ है. सो ये चीज़ तो आपको सर्वर में जाके ऑनेस्टली फाइंड करनी पड़ेगी कि how we are going to prevent Is the my economy as clear well, and voice? how Is my server voice आगे is कैसे clear? Hello, economy को stream. stabilize करेगा so that Can you hear me? it Hello. won't like. Is my voice is clear? Hello, chat. Hello, hello. What's up? Hello. So ये चीज़ उसमें figure out हो जाएगी, but still suggestions are still up. So जैसे जैसे आप लोग खेलते जाओगे तो उसमें हमें भी suggestions देते जाना, bugs and issues report Hello. करते जाना, so that will help a lot. Okay. So yeah, I'm back. Thank you. So I think did you answer this? क्या SoulCity Yeah. में quant v use कर सकते हैं? I think you guys can't. Quant v doesn't work. Ah. We'll be on pure mode level 1 guys. So I Oh. think जिन लोगों के Oh. मन में क्वेश्चन है उसका आंसर इससे हो जाएगा. NV works fine. Quant v probably won't. तो कुछ mods हैं जो नहीं work करते, but this is for you guys only because this eventually adds some security. So yeah. Nice question, Flash. चला सकते हैं चॉपर रोड पे, बट वो चलाते चलाते वो रास्ता जो है वो SoulCity से बाहर जाता है, वो वाली जो रोड है. That's what I wanted to address over here by that question. Thank you, Light. ठीक है, तो the HUD will have thank you to Mozart, the HUD has a altitude meter, so थोड़ा Oh, रोड पे नहीं 7. चलाने का. Okay, अगर yeah. तो also about resolution लो कर सकते हैं. हाँ, resolution you can lower resolution, but aspect ratio you cannot change. ठीक है, aspect ratio is a thing we want कि वो standard ही रहे. Stretch resolution, we really don't want the game to become, we want it to be more chill environment. हम लोग ने बहुत सारे ऐसे mechanics हैं जिससे कि it will be more realistic in nature, तो वो चीज़ें उसको force करती हैं. So it's an experiment for us too, we'll see, but I think it should be good. मतलब it should be something new. Yeah. Okay. क्या okay, अगर सारे devs okay, guys, I saw a lot of our devs, they got interviews with cops. So can we start our character progression from day one, like not completely jumping into progression, but step by step? You definitely should, because see the way we are Rexy, setting कौन you up हटाना in है? the server, Afi, कुछ Hello. इस तरह से वो it's Quantity not picturized allow. that you NVA are only. arriving into a new Quantity city, निकालना पड़ेगा. and that's why if you guys have not अभी तक hint pick नहीं किया आप लोगों ने, तो in our graphics हम लोग we show boarding passes, tickets, airport lobbies, Stream पे है क्या? काफी सारे वो जो elements हैं, they are not just for cosmetic or वो we wanted you guys to pick from there कि you guys are just arriving to a new city. Pretty much no one there would be claiming कि मैं बहुत पहले से हूँ यहाँ पर. Everyone would be that we know a little bit. Try to explore as much as
of you can. ठीक है, so which graphic modes are allowed? ऐसा प्योर मोड 1 के अंडर अगर आपका कोई भी ग्राफिक मोड चलता है इट्स अलाउड. जो सब मेरे को पता है चेक पॉइंट वी डजंट वर्क बट एनवी वर्क्स फाइन. एएफके के क्या सर्वर में यस होना चाहिए. So what about cop prio? For cop main, can we know like कब से होगा so that we can take normal Friday? Okay. So to address cop prios, there will be department priors for everything जहाँ पे department related role play involved है, which is either cop or EMS or DOJ. I mean, I think we'll try to cover a decent enough amount of number. Your cop prio only applies to let's say you're a cop and the server has provided you a cop prio. वो सिर्फ आपके cop character पे ही apply होगा. मतलब the moment you select to connect हाँ with, बे और अगर आप ऑप्ट करते हो कि आप बोल रहे कॉप कि नहीं प्रायो के चलेगा थ्रू सर्वर के अंदर कनेक्ट कर रहे हो, तो जो आपके कैरेक्टर क्वांटिटी नॉट सिलेक्शन अलाउड ओनली स्क्रीन होगा एनवी एनवी वहाँ पे यू विल महंगा है ओनली बी एबल टू सेलेक्ट योर पैसे पैसे कॉप महीने के कैरेक्टर और ईएमएस कैरेक्टर और कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड कैरेक्टर ही आप सेलेक्ट कर पाओगे वहाँ पे. तो वो आपका स्टार्ट होगा आई दर्द है so there is a in-RP thing planned for all the cops when they will get their roles. सोचा था Immediately एनवी बैन जैसे ही होगा आप लोगों को roles मिलते हैं कॉन्ट आपके, बंद you guys will have the department prio. वो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो जाएगा. आप लोग लियो जनरल ओसी में डिस्कस कर लेना. फ्लैश में भी इफ़ यू वांट्स टू टॉक अबाउट इट हियर और लेटर he can do it. He knows more and Flash, I think, or Rankit can tell you guys more. But the moment you guys will have roles in the server and cop mains, उन लोगों को cop prio के लिए we'll start adding those priors. Um, ठीक है. we're talking about priors, right? Cop priors. I just want to add one more thing, guys. Your contribution inside the server also, as a cop, also matters in priorities. So keep that in mind if you're a cop main. Yeah. Just wanted to clear that. Not cop, I think I'll speak for all the departments. So Rishit hai here from DOJ, and then I think we don't have Tajinder or Sky, but Shampoo is here. So for EMS, for DOJ, for every place, it's obviously जो cop prio, we expect you to make your good use of that prio that the server is providing. तो आप आए and you give your contribution. So we'll make sure कि हम लोग उस पे we'll monitor it very closely. Okay, so there should be a time frame also for criminals and robbers for their situations. Other than singing songs for robbers, hostages are not getting any role play. Sometimes they just tell hostages to stand at the take more than 2-3 hours of their unplanned robbery. ठीक है, I understand कि हाँ, I know it's very important. Some scenarios get a little heated up. Though I see a lot of times people having fun with hostages as well. Character पे depend करता है. If someone's नो character मोर is a ग्राफिक्स little ओ like सर humorous, funny, and um, they're still criminals. वो कर रहे हैं आपके साथ. I think justifies. I cannot enforce second this, but हाँ, be mindful guys. थोड़ा सा all our players and ये environment जो है वो um, this whole यार लाइट environment भाई is कोई अगर हॉस्टेज बनाया तो हॉस्टेज को वहां पे एंटरटेनमेंट तो कराएगा नहीं यार लाइट भाई बिल्कुल मतलब वो वही मैं तो कह रहा हूँ सो जिसने दैट इज थिंग वी कैन नॉट एनफोर्स दिस, वी कैन नॉट हाँ डेफिनेटली हाँ एनफोर्स दिस. आप बी माइंडफुल. अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने पास्ट सिचुएशंस में देखा, अभी मैकेनिक्स कैसे होंगे दैट यू गाइज डोंट नो, सो मैं कोई assumption अभी तुम लोग को नहीं देना चाहता. बट व्हाट आई थिंक इज कि लेट्स से आप किसी को हॉस्टेज बनाते हो, आप किसी पोजिशन लाइक पॉइंट तक पहुंचते हो जहां आपको कोई भी हाइस्ट इनिशिएट करना है और आप देखते हो कि अभी कोई हाइस्ट चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लेके घूम रहे होगे, राइट? यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट पर्सन्स टाइम.
and you have to release him. So things like that. ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये खुद ही हो जाना चाहिए, right? 45 minutes. So that's important. DOJ responses कब तक रिशित? Responses will be out before the launch. Anyways, वॉक इन इंटरव्यूज होंगे तो आप सर्वर के अंदर जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा जब भी लॉन्च होता है, तो या ऑल्सो वन मोर थिंग आई सी people passing comments in the PTS channel. Please like maintain the decorum. There is off topic chat, you can continue over there. Okay. So how are we going to counter the aggression of gangs towards civilian, because every gang member क्या कर लेगा, and then have resources, everything is suppressed. ठीक है. So Ferdin, I think if you already heard me say, what I said was कि कोई एक dependency हम लोग create करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक वो gangs appear होंगी आपको दिख जाएगा already कि there will be gangs will have to rely for some stuff to get from civilians in order to progress in a lot of things. And with that, I think gangs अगर smart होंगी तो they will understand कि उनको सारे civilians से अपना relation कैसा रखना है, ठीक है? So with that being said, I think that should probably answer your question, I think, जो आप पूछने की कोशिश कर रहे थे. जिनकी बैक स्टोरी पीडी से रिलेटेड नहीं है वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी, तो क्या हर कोई फिल कर सकता है? और फिर आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, तो अगर आप चाहो तो यू कैन मे बी थोड़ा सा इसको डिटेल में डाल सकते हो, बिकॉज अगर बैक स्टोरी उनकी पीढ़ी की नहीं है और वो फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि क्या वो दूसरा कैरेक्टर बना रहे होंगे शायद. So there could be multiple scenarios, but if you want आप थोड़ा सा मतलब you can put your question again थोड़ा डिटेल में, will come back to it. FT cooldown कितना है? Yeah, but I don't think really see Maxter that these things should matter. I mean अगर आप AFK हो 5 मिनट भी तो I think you should get kicked. See, there'll be people, if let's say there are people in the queue and you're AFK in the server, then you're already doing injustice to someone. ठीक है? तो 10 मिनट 15 मिनट फर्क नहीं पड़ता इन क्वेश्चन से, आई फील. टफ सर्वर मत रखना, पता चले लॉक पिक करने के लिए रोना रहेगा जब किसी अब ये मतलब बहुत ही वियर्ड आस्क है, बट अगर आपको लगे कि आप लॉक पिक नहीं कर पा रहे हो तो देयर कैन बी a very civil way to live in the server also, I guess. ठीक है? और नहीं कर पा रहे हो तो that is your character's flaw, right? Okay. अगर FPS नहीं आए तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं कर सकते. ठीक है? आई थिंक आई कवर्ड इट. 16:9 works. 4:3 doesn't work for sure. और भी हैं रेजोल्यूशन, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज वाइट लिस्टेड राइट नाउ, बट आप वो चेंज करोगे तो द सर्वर विल गिव यू नोटिफिकेशन. अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोगों के लिए तो इट विल आस्क यू टू चेंज इन 30 seconds or something, or else you will get kicked from the server. मेरी बैक स्टोरी पीडी की है लेकिन फर्स्ट टाइम हैप्पी विद सिविलियन, इज इट ओके? यस. Is there anything called copyright? I think Jimmy, I answered your question. क्या हेली से कट के बंदा मर गया हूँ बाय मिस्टेक? क्या हेली से कट के बंदे मर गए? सो वो इट्स नॉट से ओके, लेट्स नॉट गो टू बैन, बट वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन है क्या एंड किस पर्पस में किया गया है. बाय मिस आई मीन ओके, सो बाय मिस्टेक यू हैव रिटन, then okay, I don't know how to even answer that question.
Any EMS department priors are there, guys. But again, जैसा Flash ने बोला, you need to definitely show your dedication उस character के towards for us to keep वो बहुत constantly review होगा. That one thing will be very under a very close monitoring. If the PC is slow, then what to do? 5 minutes I felt was decent. इससे ज़्यादा रखने का मतलब है कि then it will not just be called reconnect prio. Being very honest with you guys, 5 minutes से ज़्यादा reconnect prio, it will not fall in reconnect. It will just become a priority at some point in time. इनमें से crim एक साथ कर सकते हैं. And also if we get selected for EMS, then characters buy करना पड़ेगा. So I think this is a question that someone had. Okay, thank you for reminding me about character slots. So character slot, definitely you have to plan your characters. You get one free slot from the server. आप एक character बनाएं, एक character खेलें. This is done with the intention to um, only have people who have made up their mind and are very dedicated to invest time on two characters. Uh, the whole point of the second slot or multiple slots being paid is this. We don't want कि आप disposable characters बनाएं, which is like in between 5-6 दिन के लिए अगर आपके मेन कैरेक्टर पे आरपी नहीं है तो फिल करने के लिए फिलर की तरह कुछ भी विथ लेस प्रोग्रेशन यू डू बैड आरपी. ठीक है. द पर्पस ऑफ डूइंग वन कैरेक्टर इज कि आई नो whoever it seems like an investment right now, but whoever would be very interested कि वो टाइम डेडिकेट करेगा अपने सेकेंड कैरेक्टर के प्रोग्रेशन पे उतना ही जितना वो अपने फर्स्ट कैरेक्टर पे कर रहा है. I think then only it will make sense to buy. I won't say the reason I've not kept even two slots this time, or we all I think decided, it's not me. We all came to this conclusion is we felt कि we want to make sure we don't want to see those disposable character scenarios जहाँ पर people would just make a character for a few days and it'll because वो character डेफिनेटली फास्ट प्रोग्रेशन करेगा बिकॉज आप उस पर उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे. ठीक है. या what tier of prior departments get? It's a different, it's a custom tier. um we will update you. I think your department head will update you a little in details about it. Abhi I think we are still in little early stages about department prior, but I think it should be decent enough. Also department prio or cop prio EMS whatever prio जो भी है वो that will be applicable to your only particular character, either it's PD, EMS, etc. Don't expect the perks given to the department prio to be gelled along with your second character too. So ये clear करना था बात. It will be only for your cop character only. अगर आप कॉप में से आ रहे हैं और आपका एक सेकंड कैरेक्टर भी है तो उस पे वो प्राय एप्लीकेबल नहीं होंगे. Okay. Yeah, thank you, Oliver. Thank you. जी. Is that ये वो ही मार Can रही we get limitation on abuses? So guys, with abuses, I think मैंने इसके first half वाली meeting में cover कर लिया था. Streamer friendly है. It's something you're not comfortable. You have to just use local OC and ask the person to stop doing it. आपको immediately stop करना है. और also मैंने वो भी समझाया था कि you need to know कि नो योर ऑडियंस, नो योर क्राउड. जिन लोगों के अराउंड आप आरपी कर रहे हैं उस टाइम, अगर किसी को नहीं पसंद है या नहीं करते हैं, आप डू नॉट स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट यू नीड टू असेस. जैसे रियल लाइफ में भी आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो, देन धीरे धीरे इफ यू सी कि ओके ही इज कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, देन यू गो टू दैट स्टेज. We are fine. I mean, obviously, we are not kids here. We know कि if you in a group is comfortable using that language अपने आपस में,
we should not have a problem with it. But अगर किसी को problem है but आप still उसके मना करने पे कर रहे हो, we will have a lot of problems with you then. Okay, please do not do that. कि मैं मैकेनिक में प्राय होती है नहीं. So I think we've covered most. We've heard in the last one that snitching is not allowed. Yeah, that's But not allowed. It's as simple yeah, as that. yeah. Let's keep it simple. उसमें कुछ है ही नहीं कुछ बात करने वाला. Yeah. स्निचिंग के नाम पे बहुत रगड़े हो चुके. So let's keep it away. They're saying news reporter, private detective, investigator. So we would, if there would be a scenario जहाँ पे आपको लगता है कि you have to snitch but you have proper RP, we would wanna see just open a ticket, talk to us, okay? We wanna make sure कि आपके progression से बहुत सारे लोगों की RP नहीं खराब हो रही हो. So we wanna make sure कि that is being taken care of. Okay. Yeah. Forced RP is not allowed. Yeah, not at all. Any person feels that they're being forced for a certain RP, just use local OC. Okay. The audience of VLT RP, we know there are a lot of rules and about do's and don'ts. Most of the players there were so उन्होंने हम लोगों को हमने entertain किया. I want to request new people like me who got a chance to be here, try the best. So I think it's simpler. जो मैं बोलूँगा, the moment आप you get into the server, everyone is same and I feel कि उतने ही chances हैं रूल टूटने के जितने आपके हो सकते हैं, शायद मेरे से भी टूट सकते हैं. You just have to be super cautious. Just make sure कि you read the rules. Uh, but I mean, it's all about enjoying the character, and I think it should be fine and should look nice. At least two characters should be free. I think already I have given a justification about it. We all together here feel um कि एक कैरेक्टर को प्रोग्रेस करने में it takes multiple not weeks but months properly progress करने में. I do not see a reason why people will have uh you know uh will On need top of that, immediately. people get inspired and talk about so many international servers जहाँ पे सिर्फ घुसने का $1,000 $500 लग जाता है. कैरेक्टर स्लॉट्स का $1,000 फीस है. So when we talk and preach a lot of international things in server and we are bringing it in our own country and trying to make a change and call it as a premium server, I think we should respect that thing, isn't it? We've called it a lot of times. We are a premium whitelisted server. So let that be. And we have a lot of servers जहाँ पे बहुत सारे character free मिलते हैं. So you can always try those servers and अपना role play वहाँ पे दिखा के you can always attract या build your audience. I mean, like that could be as simple as that, isn't it? Right, bhai? I mean, I'm just saying, कि guys, we are different because we are trying few things different. It's just if you want us to fall under the same pattern which has been happening, तो हम लोग कोई change ला नहीं पाएंगे. So that is what it is. Okay. A person has engaged with civilian RP, so does he need to fill any form for mechanic? नहीं. It'll see. So whenever mechanic RP start, जो server में जब भी start होगी, आपको किसी ना किसी सर्वर में देयर मल्टीपल वेज जिसके अगर आपको न्यूज़ मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो आप जाके वहाँ पे अपनी आरपी इनिशिएट कर सकते हैं. अगर डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल. अगर मैं ओनर हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों से फॉर्म भरवाऊँ, मैं इंटरव्यू लूँ डायरेक्टली, मैं लोगों से मिलूँ, दैट इज़ मी. देयर कुड बी सम अदर पर्सन, जो कि रियल लाइफ में भी होता है कि सम पीपल आर मोर फॉर्मल, प्रोसेस ओरिएंटेड, कुछ लोग थोड़े कैजुअल अप्रोच होता है टुवर्ड्स फ्यू थिंग्स. तो
I mean it's simple. आप ओनर टू ओनर डिपेंड करेगा. आई डोंट नो हु बिकम्स ओनर. जो बनेगा उसके हिसाब से आई थिंक. Someone needs to understand that we are not IRL doctors with limited knowledge. Huh, guys, honestly, do not criticize doctors. Trust me. Making fun or probably not respecting EMS RP, I personally will get very hurt and will probably not have a good conversation. ठीक है? They're trying. ठीक है? They're trying to give you a role play. I know कभी कभी कुछ गलत बोल सकते हैं. And we just have to have that थोड़ा सा leniency उनके लिए. हाँ, ठीक है? मतलब in this being said, the other way around, if we talk about doctors को लोग जो आके थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं उन चीज़ों को लेके, ये जो गैंग्स और क्रिम का हमने कॉप्स का अलग-अलग किया है, अभी नेक्स्ट टाइम से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गैंग्स कृपया करके पीढ़ी को उनका काम और एसओपीज ना पढ़ाएं, सिंस आप लोगों को भी एसओपीज इन एनी फॉर्म और अदर वे राउंड पता लग जाते हैं. सो प्लीज गैंग्स को वो ना पढ़ाएं, पीडी को ना पढ़ाएं, बिकॉज पीडी इज ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब. एंड द सेम गोज विद पीडी कि वो गैंग्स को उनके रूल्स और उनके चीज़ों के बारे में, हुड एरिया एंड थिंग्स के बारे में जितनी आरपी नॉलेज है वहीं तक रखें. बस अब पुराने सर्वर्स की नॉलेज यहाँ पे लाके थोड़ा सा वो मिक्सिंग हो जाएगा, तो उसको थोड़ा दूरी रखते हैं. मैं वही कह रहा हूँ गाइस. इट्स ऑल लाइक कि जैसे आपको पता है कि आई मीन कि लीजन स्क्वायर कहाँ है या एमआरपीडी कहाँ है. एंड आई नो कि इट माइट सीम कि थोड़ी ₹2 एक्टिंग है फॉर डे वन, बट वो करना पड़ता है. ठीक है? फॉर योर इनिशियल प्रोग्रेशन यू नीड टू just switch off a lot of things that you know about GTA and just try to live, मतलब live your character. ठीक है? I don't know much, but does food get 5? Yeah, food and everything else will have a lot of everything has DK. And there are a lot of things to be done from civilian point of view. आई थिंक इस बार कॉप क्रिम से ज्यादा आरपी सिविलियन के पास है, अगर करना चाहेंगे ठीक से. we've added lot of MLOs too and lot of features too, जिससे civilians को बहुत आरपी मिलेगी. So don't find out excuses to go into the crim side. uh, we can always, like Heba said earlier, कि we can always promote civilian RP and उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. So उस माइंडसेट में मत जाना कि जाएंगे गैंग गैंग करेंगे, वॉर करेंगे तो ही हमारे पास वॉचिंग और ये सब आएगा. इफ यू आर ट्रूली एन आरपी प्लेयर, आप अगर अच्छे से सिविलियन आरपी करके कुछ कुछ भी करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, वी हैव अ स्टूडियो 2 जो हमने अपने लास्ट स्ट्रीम में शोकेस किए थे. there can be multiple events done there and lot of things other than that, lot of civilian jobs too. So yeah, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं उस तरीके का. Yep, 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 yep. ठीक है गाइज. लास्ट फ्यू एंड आई थिंक 1-2 मिनट बाद बंद कर दियो ऋषि पीटीएस. ठीक है? एनीवन? ऋषि शैम्पू एनीवन? आई थिंक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक अब रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन Navya, I think your question is from last year's servers are ending. उनका RP gangs पे ज़्यादा focus होता है. Can we see something different this time? हम लोगों की तरफ से we have made sure. ठीक है? We have definitely made sure. That is, I mean, I know with introducing a lot of rules, it's a drag. वो अच्छा नहीं लगता कि हम बहुत rules है, so much to remember and all those things. But वो सब इसी mindset के साथ किया जा रहा है कि we are trying to do something new. Uh, ठीक है? Can City Hall provide a mortgage license for business in the city to give हाँ legally loan is legal in role play? I mean, Prabal, who's stopping you? आपको कौन रोक रहा है जाके आरपी इनिशिएट करने से? नो वन हल इज स्टॉपिंग यू, राइट? तो अगर इफ यू हैव दिस आइडिया, वो इनिशिएट द रोल प्ले. अगर हम लोगों को लगेगा कि आपका प्रोग्रेशन अच्छा है तो आई डोंट सी हाउ दैट कैन नॉट बी डन. ठीक है? सर्वर आया I've नहीं. never done गैंग TDRP before, गैंग but I'm गैंग all up for गैंग learning. Should I be गैंग worried about my interview? नहीं, I think the interviewers गैंग are already mindful
of this situation कि काफ़ी सारे लोग हैं वो learning के लिए आ रहे हैं, and I hope you have a good experience while interviewing. Can player have two characters, one with PD, one with AMS, basically two government characters? I do not see a problem with that, honestly, Felix. Launch timing क्या है? Launch timing बता दिया मैं 7 to 8. Is there an auto shop job? Just RP it out. 7 Compulsory to to 8. continue the backstory that has been filled in the form. हाँ, obviously. जो आपने 7 backstory to fill 8. किया है, जो हमने पढ़ा है, हमने उस basis पे आपको white list किया है. अगर अब वो आप नहीं follow करते हो या अगर आप change करना चाहते हो तो you open a ticket. It's basically, I think, backstory is 7 usually a to very 8. crucial point for us to whitelist someone. So, yeah. How many gangs? I think you guys are just being way ahead of yourself. Just stop thinking about gangs. अगर आप सोच रहे हो आप ऑलरेडी अच्छी आरपी से स्टार्ट नहीं करने वाले हो, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट. ठीक है, अभी इट्स द स्टार्ट, लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. अगर आई थिंक यू जस्ट थिंक अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर का क्या ट्रेट्स है, उसकी क्या स्टोरी जाती है. जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट गैंग्स राइट नाउ. ठीक है, आई लिटरली वुड से कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई 2-3 हफ्ते तक सोचे भी, एक महीना भी पकड़ के चलो. लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट इट फॉर अ मंथ. ठीक है. Also, I think Goldie Bhai asked a very interesting question about from Logic. So yeah, Logic, you can respond to us in off-topic chat. But I think this is all from me. I need some water. पर अगर कोई भी और like we have the whole crew here. अगर if I missed anything, guys, please take it away. भूल नहीं रहा कुछ. Okay. So I think Goldie Bhai covered everything. I would suggest the crew जो हमारे टीम में जो बैन वैन का काम ज्यादा देखते हैं, वो लोग थोड़ा सा रेफर कर दे कुछ चीजों को if they want to, so that would be better. I mean like उन लोगों का end of the day काम आसान होगा, the less the tickets, the less the reports, and if they want to specially mention something like Rashid, Shampoo, Rusher, Flash, Cadbury, Yeah, Karthik. please, I want to mention exploitation mat karo, because we would be rigorously going through the logs. And, proper progression करो. पता चला हर दूसरे दिन तुम एक कुछ स्पॉन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं है, बट वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. एंड अगर कुछ बग्स मिलते तो बी ऑनेस्ट, पुट फॉरवर्ड द proofs, attach the proofs in the bugs channel, ताकि our developing team can fix it at topmost priority. Yeah, मत करो कुछ भी exploitation. अच्छा ही लगता है बैन देना, वो भी परमा बैन. That's Guys, new start हो रहा है. I would highly recommend like progression पहले पॉइंट पे रखो कि मेन थिंग स्टोरी बिल्ड, प्रोग्रेशन, अच्छे से इंटरेक्शन. एंड ऑनेस्टली माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज टू रोल प्ले विद न्यू प्लेयर्स ज़्यादा. लाइक एवरी टाइम आई हैव डन इट कि इवन गैंग्स, अगर मैंने गैंग्स करी हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने मेजॉरिटी टाइम गैंग्स सेम बंदों के साथ नहीं करी है. सो दूसरे लोगों को भी आरपी मिलती है उससे, और उससे लोगों से इंटरेक्शन वगैरह भी बढ़ता है. तो प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग प्रोग्रेस करो, जिन लोगों के साथ तुम्हारी आरपी बिल्ड हो रही है उन लोग के साथ स्टोरी बिल्डिंग करो, उन लोग के साथ एक्सप्लोर करो. काफ़ी नए लोग मिलेंगे तुम लोगों को साथ में, और उसके साथ भी आगे चल के बहुत अच्छी आरपी हो सकती है उसमें. सो प्रोग्रेशन की पॉइंट. बैंड्स, अगर कोई फेल आरपी वगैरह कर रहा है, ट्राई टू एजुकेट देम. लाइक जितना हो सके. ऑब्वियसली इन आर पी ओ सी मत चले जाना कि हाँ, बट लाइक थोड़ा बहुत उनको अगर तुम जानते हो या पता है तो एटलीस्ट ट्राई टू एजुकेट देम. अगर फिर भी एक ऐसे एक्सटेंट पे हो रही है तो यस, ओपन अ टिकट, तो हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे वो. बट ऐसा ऐसा दिमाग में लेके नहीं चलना कि भाई ये बंदा बैन ही करवाना है या ये बंदा नहीं होना चाहिए. तो ऐसे लेके मैं चलना.
नए आरपी प्लेयर्स भी आ रहे हैं काफ़ी, तो लेट्स ट्राई कि वो लोग भी आगे चल के अच्छे से आरपी करें। आगे चल के क्या पता वो लोग भी बहुत अच्छी आरपी दे सर्वर को। एंड सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच के मत करना आरपी, मेनली ऐसा सोच के करो कि जिससे ओवरऑल सब सर्वर को भी, पूरे सर्वर को भी आरपी मिला। सो वैसे देखो कि सबको आरपी भी तुम बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के पीछे जाके या मैं बार बार एक ही चीज़ फॉलो कर करके आरपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू डू समथिंग जिससे तुम्हारी तरफ भी लोग आने की ट्राई करें, तुम्हें तुम्हारे साथ आरपी करना भी पसंद करें, या तुम ऐसा आरपी स्टोरी लाइन दो लोगों को कि उससे आगे चल के लोगों को भी आरपी मिले एंड सर्वर को भी आरपी मिले। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन मेन थिंग वो करना। और गैंग वगैरह का तो अभी गाइज मत सोचो, अभी तो टाइम है काफ़ी। गैंग में तो अब गैंग क्वेश्चंस भी मत ही पूछो, क्योंकि गैंग क्वेश्चंस भी बिफोर गैंग अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी, तो कोई एक मीटिंग वीटिंग रख लेंगे, वो टाइम पे गैंग क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। अभी ये मत सोचो कि हम लोग 10 बंदे 15 बंदे बैठ के आए हैं कि आगे चल के यही करेंगे यही करेंगे। सो इट इज़ टू अर्ली स्टेज वो टाइम पे अभी ये चीज़ के लिए। तो अभी जितना हो सके एंजॉय करो, और अच्छे से एक कम्युनिटी बिल्ड करी जो है उसको, और लाइक लेट्स मूव इट फॉरवर्ड और एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। That is all For from my side. Crims, yeah, thank you, Rishabh. For Crims, guys, I would like to add one thing. कि एक चीज़ ना बहुत ट्रेंड में हो जाती है, कई बार हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेट्स से बीइंग अ क्रिम, आई एम डूइंग रॉबरीज इन द सेम वे फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, नो क्रिएटिविटी, गाड़ी ला रहे हैं, स्केप कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इट यूज टू हैपन बिफोर कि यार लोग सोचते थे, प्लान आउट करते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विल टेक दीज काइंड ऑफ वेज, ये कार लेके जाएंगे। अभी नए नए प्लेयर आ रहे हैं, नया नया प्लेयर बेस बन रहा है, तो मे बी दे हैव मोर क्रिएटिविटी, जो लोग अभी नई नई आरपी स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई टू डू आरपी विद देम, प्लान आउट विद देम, एंड ट्राई टू कम अप विद सम इनोवेटिव थिंग्स अदर देन जस्ट एक गाड़ी लेके गए, उससे एस्केप नहीं हो रहा, बैकअप आ गया, उससे भी एस्केप नहीं हो रहा, तीसरी बुला ली, वो बैकअप आ गया। सो डू समथिंग कि आप लोग को भी मज़ा आए, काउंटर करने वाले बंदों को भी ज़्यादा मज़ा आए। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी। I would like to answer the question asked by PP. Ki, take sometimes like cops taking better lines than the what do you say racers. So in this, PD has a department named SCU, which handles the enforcement unit. So technically, they are trained, and I guess you have done cop RP from like more than 2 years, so you should be knowing this thing. एंड ऑन दिस आई वुड लाइक टू ऐड ऋषित के, एज ऋषित Hmm. स्टेटेड के कॉप्स भी लाइन से ले लेते हैं, कॉप्स उन लोग से पहले जंप ले लेते हैं। ये जो होता है ना, कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आप एक जंप के लिए जा रहे हो, कॉप आपसे पहले ले लेता है, ठीक है। ये आप ही लोग का सिखाया हुआ है उनको, आप लोग इस पैटर्न को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते हो, वो लोग उसी से सीखते हैं, एंड देन दे डू द सेम। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। अब वही रेसिंग में भी अप्लाई होता है, वही रूट बार बार लोग जाते हैं and फिर लोग सोचते हैं कि कॉप्स भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, व्हाई आर दे और जिमी एक्सपेक्टिंग जैसा कॉप तो प्रोफेसर। वीडियो बना बना के डालता है, लाइंस की, अरे ट्रिक्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, मतलब क्या बताएं, समझ में नहीं आता मुझे। टूटा। Anyways, guys, let's have fun. Uh, Yeah. jokes apart, मतलब it's gonna be a very immersive experience. आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, the way things have been put together. So uh, try to make out the best out of it. And जाते जाते please would like आप लोग, if you could all just appreciate our the entire dev team, led by Lexby for and the crew for the immense hard work they've put in the last 20 days, particularly. Thank you everyone for joining, and see you on second inside the server.
guys. All right, then we'll be wrapping up the meeting. Dancing. Bye bye. Bye guys. Thank you. Bye guys. See you in the server. Hello, bye bye. Bye. Yep. See you on second. 2nd April is on Sunday night, because Lex is outside Scotland. When he will come, then we'll server up. But fun. कैसा है? क्या करें? Let's end the stream. तो गाना देंगे गाना. हाँ, this one. Thank you for joining the stream. Bye. Peace out. Where is my? Bye 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 bye. Meet you at 2 April at 8 p.m. 8 p.m. So bye. Thanks for coming. Yes. ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਮੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਓ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਨ ਚਾੜ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਓ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਜਣਾ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਰਨ ਫਰੈਂਡਾਂ ਵੇ ਓ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਫੂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਰਨ ਫਰੈਂਡਾਂ ਵੇ ਓ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਫੂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਲਾਨੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ ਗੇੜਾ ਸੈਕਟਰ 8 ਕੁੜੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੁੜੇ ਧੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੁੜੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੇ ਹੱਥ ਮੁੱਛ ਤੇ ਰੱਖ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਤੱਕਦੇ ਓ ਓਪਨ ਰੈਂਗਲ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਚੱਕਦੇ ਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰਨ ਫਰੈਂਡਾਂ ਵੇ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਊਲ ਫੂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰਨ ਫਰੈਂਡਾਂ ਵੇ ਯਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਫੀਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜਣ ਤਗੜੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਟੈਂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਦ ਕਾਰਾਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੱਤ ਲਹਾ ਕੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਗੱਭਰੂ ਤਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਥਾਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਨੀਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਕਾਰਾਂ ਥਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੁੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਾਂ